So, hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So, in this video, we will talk about remaining operators like assignment operator and ternary operator. Okay, so I have already discussed related to arithmetic operator, relational operator, and logical operator. And in this video, we will discuss assignment operator and then ternary operator. Okay, and one more operator will remain, so we'll discuss in next video. Okay, so here uh, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सॉरी मैंने अर्थमेटिक और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप अगर बिगिनर हैं तो एक बार आप वीडियो देखें, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। ओके, सो एवरी वीडियो इज लिंक टुगेदर। ओके, सो नाउ let's discuss about assignment operator. Okay, so what is the symbol of assignment operator? You can see here equals to, plus equals to, minus equals to, multiply equals to, divide equal to, and percentage equal to, many modules equal to. Okay, so there are six symbols we use, okay, in the assignment operator. Okay, so how to use? Okay, so let's go to the editor. Okay, I am using online editor. Okay, so let's go to that editor. Okay, online editor, and let's discuss with example that how to use assignment operator. Okay, and if do you have any questions related to that, so you can ask, you can add in the comment box. Okay, so let's hear. So here, uh, let's clear this. Okay, so what we need to do? First we need to define header. Okay, has include include, then standard input output stdio studio dot h. Okay, has is the preprocessor, and then that is a mandatory thing, because c controller will always search main function. Okay, so we need to define main. Okay, and then that is the main function. Okay, now how many symbols we need to use? Six symbols: equals to, plus equals to, minus equals to, minus equals to, multiplication equals to, and division equals to, and last one modules means percentage equals to. Okay, so this is the symbol. Okay, this is the symbol we use. Okay, in the assignment operator. Okay, so now here let's define two variables. Okay, here integer number 1, we are defining the variable number 1 is equal to 10. Okay, integer number 2 is equal to 20. Okay, so here first let's add. Here what we are using? First we are using the first symbol equals to, we are using assignment operator, we are using equals to number 1 equals to 10, means 10 value we are assigning in the number 1 variable. Okay, so that we can use, otherwise you can use like that also. Number 2 equals to number 1, means whatever the value of number 1 will assign into number 2 variable. Okay, so like that you can also use. Okay, so you can see now that you can, sorry, you can see that example now related to equals to. So I have already used the first symbol. Okay, now second symbol. So suppose here I want to add number 1 plus number 2, and we are going to assign into, there is a third variable number 3. Okay, so what do we need to do? We need to add like that: number 1 number 3 is equal to number 1 plus number 2. Okay, like that we can use. Okay,
and suppose I want to use that number 1 plus number 2 will assign into number 1. Okay, so like that number 1 is equal to number 1 plus number 2. So what will happen? The number 1 value means here what will happen here, like internally use number 1 is equal to number 1. What is the value of number 1? 10 plus symbol e plus arithmetic operator using, and what is the value of number 2? Okay, number 2 is 20. Okay, so value 10 plus 20 will be 30. 30 will assign into number 1. Okay, so same, and this functionality we can use using assignment operator. Number 1 plus, okay, equals to number 2. So what will happen? Like number 1 value plus number 2 will add, and that value means 10 plus 30, 10 plus 20 will assign into number 1. So this same logic we are writing using assignment operator like that. Okay, so here printf printf. Now we are here we are first printf number 1 value, number 1. Okay, plus here comma number 1. Okay, here add percentage d. We need to print na. So what formatter we need to use? Percentage d to print integer number. Okay, so previously using this operation, okay, means हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, what वैल्यू क्या हो सकता है इसके पहले? तो इसके पहले नंबर 1 will print 10, and then after performing the operation plus equals to, that value will be modified. Okay, means number will 10 plus 2 will be initialized into number 1, so value will be updated. 10 would be 30. Okay, because हम ये लिख रहे हैं ना, ये हमने सिंटेक्स यूज किया असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, बट इंटरनली ये यूज होता है ना 10 plus 20 is equal to number 1. So like that we are using assignment operator. Same logic, this logic you can write like that. Okay, using assignment operator, and then number 1 value अपडेट हो जाएगा. तो number 1, then the values of the number 1 variable would be updated. Okay, let's run here. So what it's saying, it is saying constant too long. Okay, so it is saying we need to use what? We need to use double quotes, saying that we cannot work using single quote. Okay, so here okay, let's add slash n to change the line. Okay, so आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है. वी आर गेटिंग द वैल्यू 10 of the number 1 variable. Okay, and after performing this operation, okay, मीन्स हम एडिशन कर रहे हैं ना यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वैल्यू नंबर 1 की वैल्यू क्या हो गई? अपडेट हो गई, 30 हो गई. Okay, so like that you can use assignment operator. Okay, same for uh, equals to minus. So here we are using number 2. Okay, हमें क्या करना है कि नंबर 2 में असाइन करेंगे. पहले हम जब प्लस इक्वल टू यूज किए थे तो क्या यूज कर रहे थे? नंबर 1 में असाइन कर रहे थे वैल्यू जो एडिशन करने के बाद. अब हम नंबर 2 में असाइन करेंगे क्या? माइनस. ओके, नंबर 1. तो ये कैसे परफॉर्म करेगा? नंबर 2, पहले नंबर 2 की वैल्यू एंड माइनस नंबर 1, तो वैल्यू क्या आएगा? 10. तो 10 शुड बी असाइन इनटू नंबर 2. ओके, सो हियर नंबर 2 की वैल्यू हम अपडेट कर देते हैं,
एंड देन चेक करते हैं क्या आ रहा है. So what we are getting the value, let's check. So here you can see that what value we have assigned into number 2, we have assigned 20. Okay, so 20 value we are getting, and after performing this operation, okay, means number 2 minus equal to number 1. This is the short form to use a number 1 number 2 minus number 1. Then so you can see na, you can using as you can use assignment operator to subtract the between two variables. Okay, so we are using a number 2 minus equals to number 1. So value 10 minus 20 minus 10 would be 10. So 10 would be assigned into number 2. So 10, what we are getting value 10. Okay, so same like that. Suppose we are using multiplication. So what will be happen? 20 cross 10. So what will be 200. So value would be here number 2 will be updated by 200. Okay, so you can see number 2 is equal to 20. Exact value of number 2 is 20. And at the declaration time, what value we have declared here? We have defined using 20 value. Okay, and now the operation multiplication is performed, then using assignment operator, then value would be updated of number 2. Okay, so you can see here 20 200 we are getting. Okay, now here we are using divide. Okay, so what would be happen? 20 divided by 10, so value would be 2. So number 20 would be updated by 2. Okay, so here you can see exact value number 2 is 20, and after updated the value, then we are getting 2. Let's third modules, means modules means percentage. So value would be 0. अगर 10 का हम परसेंटेज निकालेंगे 10 डिवाइड बाई 20, तो रिमेनिंग क्या आएगा हमारे 0 आएगा. तो नंबर 2 वैल्यू अपडेटेड 0. Okay, so here we are getting exact value of number 2 is 20, and after performing this operation we are getting 0. Okay, so that is the assignment operator. Okay, so we are using assignment operator. So you can see that how to use assignment operator. Okay, using in C. Okay, and now let's go to the third ternary or conditional operator. Okay, there are two names, you can see ternary operator or conditional operator. Okay, so how to use ternary operator or conditional operator? Okay, so ternary operator, what is the symbol of ternary operator? That is the ternary operator. Okay, here question mark and semicolon. Okay, so that we need to use in the ternary operator. How to use ternary operator I will discuss in the later video, that what is the if else statement. Okay, and if you are aware about if else statement also, that would not be problem. But let's here explain. Suppose integer number 1 is equal to 10. Okay, and let's declare the another variable and define value number 2 is equal to 20. Okay, and here let's declare the number 3. There is another variable. Okay, and here what we are doing, and number 3 में कौन सी वैल्यू असाइन होगा कि अगर कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करना है. अगर कंडीशनल का मतलब देखिए यहाँ पे कैसे यूज करते हैं. कंडीशन अगर नंबर, हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज करेंगे. नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1, अगर नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 हो तो क्वेश्चन मार्क. ओके, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कौन सी वैल्यू असाइन होना चाहिए, नंबर 2. नंबर 2. Okay, and then semicolon. We are using a question mark and semicolon and semicolon. अगर कंडीशन ये फॉल्स होगा तो नंबर 1 would be printed. Okay, so here कैसे असाइन हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन हो गया, कंडीशन. ओके, देन यहाँ पे हम आपको लिखते हैं किस में असाइन करना है. ठीक है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन CONDITION कंडीशन
question mark and expression 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 means हाँ एक्सप्रेशन भी हो सकता है ना EXPRESSION expression 1 and colon EXPRESSION expression 2 ओके लाइक दैट। दूसरा सिंटेक्स क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है समझने के लिए। क्या कंडीशन, अगर कंडीशन ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू और ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स। मीन्स ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। प्रिंट का मतलब ये होगा कि आप अगर प्रिंटफ लिख देते हैं तो प्रिंट होगा। अगर आप कोई वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वैल्यू असाइन हो जाएगा, या आप कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि नंबर 1 एंड नंबर 2, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एक्सप्रेशन ना। तो ये सिंटेक्स क्या है कि ये कंडीशन एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सिंटेक्स हमने क्यों लिखा है, समझने के लिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, सेकंड प्रिंट मतलब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज द राइट वर्ड। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, if the condition is false then second statement will be executed. Okay, so here ternary operator syntax. What is the syntax? We need to use condition, then question mark, then expression 1 colon expression 2. Okay, so like that you can use. So here what we are using, let's print of printf printf number 3 number 3 formatter to print, because number 3 is integer value na, so that number 3 we are printing here and we are using percentage d. Okay, so here what we are saying, this is the condition. Okay, this is a condition, that is the condition, then this is the condition and this is the condition, then question mark, then expression 1, then colon, then expression 2, and in the last we need to add semicolon, that is a syntax. So here condition क्या है कि number 2 greater than number 1 means 20 greater than 10, 20 greater than 10, then number 2 value is 20, then colon number 1 value is 10. Okay, तो हमने क्या यहाँ पे कंडीशन लिखा है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, मीन फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हियर क्या हो रहा है, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1, 20 greater than 10, yes condition is true, so value number 2 would be assigned into number 3, मतलब 20 वैल्यू असाइन होगा नंबर 3 में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए 20, because what is the value of number 2 is 20. Okay, so 20 would be assigned into number 3. Okay, क्योंकि कंडीशन क्या है 20 ग्रेटर देन 10 है ना, क्योंकि ये हमने नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1, तो 20 ग्रेटर देन 10, हाँ कंडीशन ट्रू है तो नंबर 2 विल बी प्रिंट। ओके, तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 की वैल्यू 20 है तो 20 वुड बी असाइन इनटू नंबर 3, तो नंबर 3 में क्या वैल्यू आएगी 20, तो 20 वुड बी प्रिंटेड हियर। ओके, सो लेट्स क्लियर हियर एंड देन रन। सो यू कैन सी हियर नंबर 3 क्या रहा 20। अगर हम नंबर 3 इसके पहले हम प्रिंट करा दें यहाँ पे, तो नंबर 3 की वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं नल आएगा ना। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, वो इंटीजर है ना, तो जो रेंज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर रहा है ना, क्योंकि हमने परसेंटेज यूज किया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो रेंज होगा इंटीजर का, तो देखो यहाँ पे क्या है सलेशन, जो रेंज है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 32 7 से 66। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमने क्या डाला है, वो एग्जैक्ट वैल्यू 20 है ना 20। ओके, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता है इंटरनली, अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया
तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होता है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दैट इज प्रिंटिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे डाल दें नल, तो क्या आएगा? नल आएगा। एरर आ रहा है ना, नंबर 3। ओके, अनडिक्लेयर्ड। ओके, नल हमने असाइन नहीं कर सकते हैं ना इसमें, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो भी नंबर 3 वुड बी 20। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या आ रहा है? नंबर 3 की वैल्यू 20। ओके, अगर हम यहाँ पे कंडीशन उल्टा कर दें, कंडीशन नंबर 2 लेस देन नंबर 1 मीन्स 20 लेस देन 10, 20 लेस देन 10, नो 20 ग्रेटर देन 10, तो 20 लेस देन 10 तो है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? एक्सप्रेशन टू कौन सा कंडीशन होता है? फॉल्स वाला। तो हियर हमने कौन सा यूज किया है? नंबर 2 लेस देन नंबर 1, कंडीशन फॉल्स। तो दूसरा क्या है? नंबर 1, तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 वुड बी 10 असाइन होगा नंबर 3 में, तो नंबर 3 की वैल्यू 10 आनी चाहिए, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे यूज करते हैं। इसको हटाते हैं। ठीक है, लेट्स हियर नंबर 2 हियर कंट्रोल एक्स। अगर नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 है तो प्रिंट ऑफ हियर नंबर 2। ओके, नंबर 2 एंड अदरवाइज नंबर 1। अगर फॉल्स है तो नंबर 1। ओके, असाइन क्या होगा? कुछ नहीं, एरर थ्रो कर देगा इसमें, क्योंकि हम असाइन तो कर नहीं रहे हैं ना, तो एरर थ्रो कर देगा। क्योंकि असाइनमेंट तो हम कर नहीं रहे हैं, तो इसको हटाते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन हो गया ना, तो एक्सप्रेशन हो गया तो क्या कह रहा है? नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1। क्या बोल रहा है ये? एक्सपेक्टेड। ओके, हमने ये सेमीकोलन यूज कर लिया है ना। हाँ, here now you can see number 2 and हमने क्या किया था? ये किया एंड ये किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 है, ठीक है, तो 20 ग्रेटर देन 10, हाँ कंडीशन ट्रू, तो नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, नंबर 2 20। अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर कंडीशन फॉल्स, नंबर 2 मीन्स 20 लेस देन 10, नो कंडीशन फॉल्स, तो हमें नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, यानी 10। तो आप देख रहे हैं 10, तो दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर, लाइक दैट वी कैन यूज। ओके, एंड और कोई एग्जांपल हो सकता है? और तुम टू मैनी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कैसे? सिंटेक्स क्या है कि कंडीशन देन एक्सप्रेशन देन एक्सप्रेशन टू। ओके, एंड हियर अगर हम प्रिंट ऑफ देखते हैं क्या असाइन करता है, PRINTF प्रिंट ऑफ हियर, कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल C कंट्रोल V, नंबर 3, number 3 would be 8 that is assigning something default value. Okay, that is a printf. Okay, so that is the default value na, number 3 is assigning this is controlling by the C controller. Okay, no problem. So up you can get my point na, that what is the ternary operator and what is the assignment operator. Okay, so if you would have any questions related to that, so you can add in the comment box. Okay, and if the video is going to helpful for you, so you can like and you can share with your friends. Okay, as well. Okay, thank you so much.